إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك ركبتي من النار، في من تمن عليك وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وعلى محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فلكتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الذي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه، ولا تريده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي،
عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا، ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء سكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. صل على محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك، وحجتك على خلقك، وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة
وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه واعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتدل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وعزز به دلتنا، واغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا،
ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل لي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان، فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن، وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت، وقد صرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين، فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفك رقابنا من النار وتدخلنا الجنة برحمتك، وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي، وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة. إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياليه ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي. سيدي سيدي سيدي، أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت، إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا، وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فارضى عني يا أرحم الراحمين. يا الله يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ملين الحديد لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام، أي مفرج هم يعقوب عليه السلام،
أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن صل عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن صل عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن صل عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل يا عليم يا حكيم يا رب الأرباب وسيد السادات لا إله إلا أنت يا أقرب إلي من حبل الوريد يا الله يا الله يا الله. لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن صل على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى الفاتحة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. इससे पहले कि मैं मसाइल शुरू करूँ आपकी खिदमत में, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर अमीर अली मिठानी और मरहुमा हमीदा भोजानी की रूह को इसाले सवाब फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खुतबे ईद फ़ित्र में बयान फरमाते हैं कि ज़कात फ़ितरा निकालो क्योंकि ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है और ये तुम पर वाजिब है परवरदिगार आलम की तरफ से। और अपने घर में मौजूद औरत, मर्द, छोटा बड़ा, आज़ाद, ग़ुलाम जो भी हो, हर एक के बदले में 1 सा यानी 3 किलो गंदम या जौ या जो भी खाना इस्तेमाल होता है उसको ज़रूर अदा करो। दूसरी रिवायत में मिलता है कि फ़ितरा जो है वो मुकम्मिल रोज़ा है, इट कम्प्लीट्स योर फास्ट। जिस तरीक़े से जो है वो नमाज बग़ैर सलवात के नहीं होती, उसी तरीक़े से रोज़ा बग़ैर ज़कात फ़ितरा के अदा नहीं होता। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवात पढ़े मोहम्मद, आपने अपने सहाबी से कहा कि मेरे घर में जितने ग़ुलाम हैं सबको गिनो और सब के लिए फ़ितरा निकालो चूँकि मुझे डर है उनके लिए फ़ौत का। तो रावी ने पूछा कि मौला फ़ौत क्या है? तो मौला ने फरमाया कि मुझे डर है उनकी मौत का। यानी एक तरीक़े से फ़ितरा निकालना पूरे साल की हिफाजत और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी एक तरीक़े से आप जो हैं वो अपना इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं जिसे कहा जाए। तो इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, बड़ी रिवायात हैं। मैं मसाइल को शुरू कर रहा हूँ लेकिन आप सबको इख्तियार है कि अगर कहीं पर बीच में कोई मसला समझ में ना आए तो आप ज़रूर सवाल कर लीजिएगा। जो पहली सबसे चीज़ है, वी हैव टू नो दैट दिस गिविंग आउट फ़ितरा इज़ वाजिब, इट इज़ एन ऑब्लिगेटरी एक्ट। तो जो भी वाजिब चीज़ होती है उसके अंदर यू हैव टू हैव दिस इंटेंशन ऑफ क़ुरबतन इलल्लाह। बग़ैर क़ुरबतन इलल्लाह के ज़कात फ़ितरा नहीं दिया जा सकता। जिस तरीक़े से हम नमाज़ के लिए खड़े होते हैं, वी हैव दिस इंटेंशन इन माइंड कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ क़ुरबतन इलल्लाह, 4 रकअत 2 रकअत मगरिब जो भी है, तो ये क़ुरबतन इलल्लाह ये ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब हम असल में ज़कात फ़ितरा जो है वो उसी खाने के ऊपर है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम खाना खाते हैं उसके लिए ज़कात फ़ितरा देना और वो हमें मुस्तहिक़ के हाथ तक पहुँचाना है। अब अगर हम चावल या आटा 3 किलो चावल 3 किलो आटा नहीं पहुँचा रहे हैं और हम पैसा दे रहे हैं किसी को कि आप हमारी तरफ से गरीब को बांट दें, तो हमें ये नियत करना है क़ुरबतन इलल्लाह कि मैं उनको अपनी तरफ से वकील बना रहा हूँ, वो मेरी तरफ से खाना ख़रीद कर खाना फ़कीर को देंगे, पैसे फ़कीर को नहीं देना है। और मुझे ये नियत भी करना है कि मैं उस 3 किलो चावल या आटे के बदले में पैसे अदा कर रहा हूँ। ये बदल मुझे नियत करना होगी, वरना ये फ़ितरा फिर से इसमें गड़बड़ हो जाएगी। आगा सिसानी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स क़ुरबत की नियत ना करे और ये क़ुरबत का जो है वो नियत का जो एस्पेक्ट है वो मद्देनज़र ना रखे तो उसका फ़ितरा कबूल हो जाएगा लेकिन वो गुनहगार होगा। ये गुनाह हुआ कि उसने गोया जो है बग़ैर क़ुरबत के ये फ़ितरा अदा किया। तो यू हैव टू हैव दिस इंटेंशन इन माइंड कि वट एवर यू आर गिविंग, इफ़ यू आर पेइंग मनी which is equivalent to 3 kilos of whatever you are giving for your zakat fitra, you have to have this intention that you are converting the value of that commodity and you are giving the equivalent amount of money to that needy person. And that needy person is also supposed to buy, he is not supposed to buy clothes out of that money. He is supposed to go and buy food for that, and on your behalf he is supposed to consume that food. तो needy को जो है वो food ही हमें देना है। अच्छा, second important thing is that
It's not necessary a person who is the head of the family, maybe he was sick, maybe fasting is not obligatory upon him, but yet he has to pay fitra. तो फितरा देने के लिए it is not a condition that you should be fasting the whole month. तो अगर आप जो है वो रोज़ा नहीं भी रख रहे हैं तब भी फितरा निकालना ज़रूरी है. या अगर कोई हमारे तकफ़ुल में है, हमारे डिपेंडेंट्स में है, if he or she is not fasting, then also I have to pay fitra for him or her. Even if they are Hindu, even if they are Christian, if they are my dependents, I have to pay their fitra. ये भी important चीज़ है. Now, 5 important conditions are supposed to be met for a person to pay fitra. और वो मुकल्लफ जो ग़ुरूब शब ईद, for example, most probably inshallah we are going to have Eid on Wednesday. It's not an announcement, it's just a probability. We have to wait and see still. Maybe tomorrow, if suppose tomorrow is the last day of holy month of Ramadan, today is the 28th, tomorrow 29th. So 29th, when the sun sets, at that time a person should have these 5 conditions. He should be baligh, he should be sane, aqil, he should be conscious, बेहोश नहीं होना चाहिए वो. He shouldn't be a slave, वो आज़ाद आदमी हो, he should be a free man, or he should not be a faqir, he should not be a needy person that is supposed to receive fitra, he's supposed to give out fitra. So ये 5 conditions are supposed to be there at the time of sunset, not at the time of maghrib. This is important. Now why I am emphasizing on this, because it has its own implications. Now ज़कात वाजिब होना और ज़कात देने के 2 वक्त हैं. ज़कात वाजिब होती है ग़ुरूब आफ्ताब से. When the sun sets, it's wajib upon us to it becomes wajib upon us to pay fitra. Yani are we eligible or are we not eligible to pay fitra? But when does it become wajib to give out fitra? It is after the time of maghrib. You cannot pay before maghrib. Now, why am I saying this? Many of the mujtahideen, they say you can pay fitra right from the 1st of Ramadan. Okay? You can give out your fitra right from the 1st of Ramadan. But Ayatollah Sistani says, yes, you can give out, but according to ihtiyat mustahab, you have to wait for the last eve of Eid up till Azan al-Maghrib. It's better to give out tomorrow night after Maghrib, if day after tomorrow is Eid. So it's better always to wait up till the time of Maghrib and until the time of Dhuhr the next day, the day of Eid. So it's always better to give on the eve of Eid, not before that. You can give before that, but there are again complications to that. Many of the marajid, they say that, few of the marajid, they say that you can even give out fitrah before Ramadan. But Ayatollah Sistani does not allow this. You cannot give out fitrah before Ramadan. Only if you are giving out, now I don't want to make it complicated, but only if you are giving out fitrah, if you are giving out some money before Ramadan, you can count it later on as your fitrah that you have given out to that poor person. But again, there are many more complications in that. Maybe if I get time, I'll get to that. So it's always better, just keep in your mind, it's always better to give out fitrah when it is Maghrib, when the azan of Maghrib or the time of Maghrib has entered. Now the one who has the intention, जो ये नियत कर चुका है कि मुझे कल जो है I have to pray Eid al-Fitr. If you have this intention, for example, tomorrow night you will be having this intention to pray Salat al-Eid, then it is obligatory upon that person to pay out his fitrah before within this time, between Maghrib and before your Salat al-Eid. It is obligatory on that person who has the intention to pay, because you pay your fitrah and then you pray your Salat al-Eid. But if a person does not have this intention कि मुझे नमाज पढ़ना है नहीं पढ़ना, उसको हो सकता नहीं पढ़ना है, शबीर भाई को जो है एयरपोर्ट जाना है मिसाल के तौर पर, तो ये जो है वो ज़ोहर से पहले जो है वो दे सकते हैं अपना फ़ितरा. तो उनके लिए ये टाइम लिमिट जो है वो ये जो वो है वो खुला हुआ है सेक्शन. तो ये जहन में रहे कि हमें कोशिश करना चाहिए. बहुत से लोग ये हैं कि हमारे पास कोई मुस्तहक आ गया बीच रमज़ान में, हमने उसको पैसे दे दिए फ़ितरे के उन्वान से. एहतियात ये करें कि उसको फ़ितरे के उन्वान से पैसे ना दिए जाएँ, बल्कि जो है वो फ़ितरा जो है वो लास्ट ईव ऑफ जो है वो उसमें दिया जाए. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि
जब हम फ़ितरा दे रहे हों तो ज़रूरी है कि फ़ितरा जब हम निकाल दें तो उसको फ़ौरन फ़कीर तक पहुंचा दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ आप लोगों से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये वाला पॉइंट। अ वेरी माइनर एंड अ वेरी सेंसिटिव डिफरेंस बिटवीन खुम्स एंड ज़कात। खुम्स में ये होता है, फॉर एग्जाम्पल यू कैलकुलेटेड योर खुम्स and you say, okay, I have to pay, for example, 100,000 shillings. This is my khums, 50,000 seme imam, 50,000 seme sadat. Now you have taken out this and you have separated this 100,000 shillings. It's in your pocket, it's in your wallet, it's in your cupboard. ये जो आपके जो है वो 100,000 है, this is still your money. Remember this. This is still your money. जब तक के unless and until this money of khums is being received by that needy person or a representative of a faqih, that is your money unless and until it reaches the hand of the needy person or whomever you intend to give it to. Then it is not your money. For example, I have this money here, okay? Suppose I'm asking you, can you use this money without my permission? You cannot use this money without my permission because this is my money. You cannot even come and change this money. You cannot come and, keep for example, I have 100,000, 50,000, 50,000. You cannot come and, give me change and take that 50,000 from this. You cannot do it without my permission. Khums mein ye hai ki khums, it's still my money. I can do whatever I want with this, note, with this bill, 50,000 bill, whatever I want, I can do it. Because I know the amount I have to pay. Lekin zakat-e-fitra mein, it is not like this. The moment you take out and you separate the amount of zakatul fitra, the moment you take it out, the difference between khums, carefully listen to this, the difference between khums and the difference between zakatul fitra is that zakatul khums is yours unless you have given it to someone, handed it over to someone, and someone receives it. But zakatul fitra, the moment you separate it from your pocket, the moment you separate it from your money, it is no longer yours. It is no longer yours. This amount, this, for example, 50,000 that you have separated for your zakatul fitra, it is not yours now and you cannot use it. You cannot change this. ये जो मैंने मिसाल दी थी, it is same as that. It is no more yours. ये जो है उस फकीर का हक हो जाता है. So you cannot come and you cannot say, okay, I need change, I will take change from. Now one important thing that the collectors of zakat al-fitra should understand, they should be at least, they should learn these masail before collecting zakat al-fitra. They should know all these masail. A person who's collecting zakat al-fitra, I cannot go to him, I cannot give him 50,000 shillings and I can say, okay, I have to pay 25,000, you give me 25,000 from that box you are having. He does not have this authority to change the bills even. You cannot say, okay, this bill which I am having is a bit old and you are having a new bill, take this 50,000, give me that 50,000. You cannot even do that. Okay, so ye jo because same as this is my money here, you cannot take it without my permission. तो उसके लिए जो है वो हाकिम शर की ज़रूरत होती है. उसके लिए you have to refer to the हाकिम शर. ये एक important चीज़ है जो हमें ज़हन में रखना चाहिए. And second of all, people who are collecting the fitra, they should ask and they should know, and people who are giving the fitra, that there should be this intention that I am appointing you as my deputy or a representative or whatever, that you on my behalf is going to give out this amount to the needy people. ये ज़रूरी है. This intention is required. तो वो you should not delay. Khums में जी I will get to that. तो ज़रूरी है कि जैसे ही हम ज़कात फ़ितरा निकालें, खुम्स के लिए ज़रूरी नहीं है. वन मोर डिफरेंस, खुम्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन जाकर हम दे दें उसको. ओके, इमीडिएटली जाकर उसको हम दें खुम्स को. थोड़ी देर रख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, पहुँचाने में ताख़ीर हो सकती है. लेकिन ज़कात फ़ितरा के लिए ज़रूरी है कि फ़ौरन जो है वो उसको मुस्तहक़ तक पहुँचाया जाए और उसमें डिले ना किया जाए, मगर ये कि जो है कोई वाक़ईन
बड़ा इशू हो, कलेक्शन में देर हो रही हो, या कहीं दूर जगह पे पहुंचाना हो, जाने में देर लग रही है, जो ओकलाई रीजंस होते हैं, जस्टिफाइड रीजंस होते हैं, उनको हमें जहन में रखना है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सवाल ये होता है मेहमान का, मेज़बान का। इफ़ आई एम हैविंग गेस्ट in my house, am I supposed to pay their fitrah? Now it is again important to understand that if you are receiving a guest before sunset, after sunset, and your guest is in, your guest is going to be there with you in a manner that you are supposed to fulfill his needs, all his needs. For example, if he falls sick, you are supposed to take him to the doctor. If he is having any issue, you are supposed to, go and solve it. He's totally depending on you. This sort of guest coming to your house on the eve of Eid, you are supposed to pay his fitrah. But even if that person comes along with his food, eats his food with his own money, then also you are supposed to give out his fitrah. But if a person is coming to your house, he's just here, he's just with you for a few hours or for a few minutes, he's just going to drink tea or have some biscuits, then he's not your dependent. You know that if he's not your dependent, that you don't have to pay his fitrah. So this is asked quite frequently, that am I supposed to pay fitrah? So people who are inviting, for example, people who are mu'mineen, who are fasting, if you are inviting them on the eve of Eid at your house for iftar, you don't have to pay their fitrah, because you are inviting them for iftar. They are not going to be there the whole night. They are not your dependents. They are just there to open and break their fast and go back home. Okay, so if they are there and just having iftar and going back, they are not your dependents. You don't have to pay out their fitrah. They will pay their fitrah by themselves. Now, it is also important for the distributors and for all of us who are giving out fitrah to understand that I cannot give fitrah in a quantity that is more than the need of that poor person. I cannot give the fitrah more than what he needs for 1 year. I cannot give him more than that. For example, 3 kilos of rice is 30,000. Let me just announce this also, that it's clear for all of you. Rice which is of superior quality is 30,000 for 3 people, 3 kilos. Rice which is a standard quality, it is 22,500 shillings. Wheat is 13,500 shillings. Maize flour is 6,750 shillings. And dates is 36,000 shillings. Now, if a needy person requires 300,000 shillings for his year, for example, I'm telling you, or 3 million shillings for a year for his sustenance, you cannot give him more than 3 million at once. So it is also important to notice that if I'm giving out fitrah, I should not give out fitrah to one person more than what he needs for his sustenance throughout the year. Now, who is a faqir? Who is a needy person? It is also to understand that a needy person is only a person who does not have his, sustenance, source of income, and who does not have his expenses, who does not have enough money to meet his expenses all throughout the year. He does not have a single point of income also. So such a person is counted as a needy person. वो कि जिसके पास साल भर का खर्चा ना हो और उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी ना हो. मिसाल के तौर पर एक आदमी है कि जो he gets his salary on on a specified date every month. Now before the end of month, maybe he finishes his salary and he does not have enough money for the rest 2-3 days of the month. He is not a needy person because he's going to get his salary the next month. We are talking about a poor person who does not have his enough financial support to sustain for the whole year. तो ये हमारे लिए उसकी बीवी, बच्चे, उसके तमाम अखराजात, वो तमाम चीज़ें जहन में रखते हुए, इसीलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर हमने रमज़ान से पहले या शब ईद से पहले किसी फ़कीर को पैसे दे दिए हैं और वो फ़कीर शब ईद फ़कीर ना रह जाए. अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. इसीलिए फ़ुक़हा जब फतवा देते हैं तो वो हर चीज़ को सोच समझ के, मिसाल के तौर पर हमने पहले रमज़ान को हमने एक साहब को जो है पैसे दे दिए,
30,000 शिलिंग्स हमने उनको दे दिए। और जब शब ईद आई तो मैंने नियत की कि ये 30,000 शिलिंग्स जो हैं वो मेरी तरफ से वकील हैं कि वो 30,000 शिलिंग्स को फ़ितरे के तौर पर ले लें और मेरी तरफ से फ़ितरा ख़त्म हो गया। लेकिन अगर ये कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उस रात मिसाल के तौर पर उनके पास पैसा आ गया या उनको इतना कहीं से वो मिल गया, पैसा मिल गया 1 साल का, तो वह फ़कीर नहीं रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि एक फ़कीर को आप 1 साल से ज़्यादा ना दें, वरना फिर वो फ़कीर की हद से वो गनी हो जाएगा। तो उस रात उसको फ़कीर होना ज़रूरी है, या हमने रमज़ान से पहले उसको दे दिया, अब हमको नहीं मालूम फॉर एग्जांपल कि वो फ़कीर हो, अब हम फ़ोन करें उससे पूछा भैया अभी भी तुम फ़कीर हो, यू कैन नॉट आस्क। तो ये चीज़ें जो है वो हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। इसीलिए कहते हैं कि जो है वो उसी टाइम उसी वक्त जो है, और जब हम पैसे दे रहे हों, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इस मसले में ये आता है कि जब हम पैसे दे रहे हैं, आई एम पेइंग द इक्वलेंट अमाउंट ऑफ दैट कमोडिटी विच आई एम सपोज टू पे, तो हमें कैलकुलेट ये करना है उस रात उस कमोडिटी का रेट क्या चल रहा है मार्केट में। हमें ये नहीं देखना है पहली रमज़ान को, मिसाल के तौर पर पहली रमज़ान को जो है वो 27,000 शिलिंग्स थे, तो मैंने 27,000 शिलिंग्स दे दिए, लेकिन ऑन द ईव ऑफ ईद इट इज़ 30,000 शिलिंग्स दैट आई हैव टू पे। तो अब ये 3,000 का जो डिफरेंस है वो हम नहीं पे कर पाएंगे, मुश्किल होगा, हमें पूरा फिर से 30,000 देना होंगे। चूँकि जो अभी सवाल आदिल भाई ने किया उस पर आइन चलिए हम बयान कर देते हैं कि एक फ़कीर को वन नीडी पर्सन यू हैव टू गिव हिम 1 सा विच इज़ 3 kilos. You cannot give less than 1 sa, which is 3 kilos. Every person should receive 3 kilos at least, or more than 3 kilos. Now, if you have a lot of needy people, this is only exception by Ayatollah Sistani. If you have lot of needy people and you have only very less amount of fitra or the commodity, then it is okay for you to divide within that 3 kilos also. But it is still recommended not to divide that 3 kilos amongst many other needy people. You're supposed to give out 3 kilos or more than that to a single needy person. Now again, if you want to give out fitra, for example, you have to give out fitra according 30,000, and you are also consuming wheat and you are also consuming rice. Both of the commodities you are consuming throughout the year. Now you can pay any of those. So for 3 kilos at least you have to choose a single commodity. You cannot say 3 kilos I will give 2 kilos rice and I'll give 1 kilo of wheat and I will give these 3 kilos to a single person. No, you cannot divide these 3 kilos into different commodities. The 3 kilos should be of the same commodity, of the same value, that money you are paying for. Yes, if I have to give out fitra for 5 people of my family, for 5 dependents, 6 dependents, 2 dependents, whatever, 1 dependent I can give out wheat, or for 1 dependent I can give out rice. That is fine. But for single dependent, you cannot divide it into different commodities. Clear है ये? कहीं पर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। तो फ़कीर मालूम हो गया हमें कौन है, किस तरह हमें देना है, ये ज़रूरी है। It is also not important for you to inform the needy person कि जो है ये वो है फितरे का पैसा है. You don't have to tell that needy person that this is fitra and you have to, are you faqir, are you not faqir? It is just important for us not to go into depth, but it is also highly recommended that the person you are giving out fitra to should be a Shia Ithna Ashari. Shouldn't be a Shia Bohri. The Bohris, they call themselves also Shias. So anyway, तो आपको शिया इतना अशरी को ही अपना फितरा देना है. और अगर if you cannot find a Shia इतना अशरी in your hometown, there is nobody, you are tired of finding, you are not able to find a Shia इतना अशरी in your hometown, then you can give it out to any other Muslim that is in your town. Or maybe then you can, even if you don't find a single Muslim, then you can give it out into a different city. Now, this Shia also should have a certain amount of conditions. This Shia mu'min you are giving out fitra to, and yes, it is haram and it is not accepted to give the fitra to a Muslim who is a Nasibi, who is the enemy of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, who curses or dislikes Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. Yes, there are Muslims who like Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, or they even don't say anything
regarding Ahl Bayt alayhi salatu wasalam, you can consider them giving if you don't find a Shia Ithna Ashari, but you in no way can give your fitrah, zakat to a person who is a Nasibi. Now this mu'min also has to have a certain amount of conditions. He should be a person, it's not required that that person is an adil person. Okay, you can give out your fitrah to a non-adil also, but he shouldn't be mutajahhir al-fisq. He shouldn't be openly doing sins. He shouldn't be a person, it is clearly mentioned, he shouldn't be a person who drinks wine, or he shouldn't be a person who does not pray. If you see a Shia Ithna Ashari who's not praying, who skips his prayers, you cannot give fitrah to him, or who drinks, na'udhu billah, you cannot give your fitrah to him. Or if he's committing a sin openly, whatever sin, you cannot give your fitrah to him. Many of the scholars, I heard them saying, discussing this issue, that people who are shaving their beards, they are committing a sin openly, and you are not allowed to give them your fitrah. If they are poor, if they are asking you your zakat, if they are claiming to be poor, it's difficult for them to receive their fitrah. The ladies who are not doing hijab, who are not observing hijab, I'm giving you examples which are apparent examples. They are coming and they are asking you fitrah. If they are not, committing, if they have no commitment towards hijab and those wajibat, and they are doing haram acts, it is again not enough for them. It's not enough for you to, just give out fitrah to these people. Any questions up till now? Now again, as I mentioned, that 1 sa' is supposed to be 3 kilos. You are supposed to give that amount of commodity in that specified amount of weight, or the equivalent amount money. But you cannot give out, you cannot say, okay, I'm giving out you, I'm giving you, helping you with clothes, I'm helping you with stationery, I'm helping you with, whatever other means. You cannot do that. You have to give out either the commodity or the equivalent amount of money. Now, it is also important to understand that maybe, as suppose, I'm just giving you a hypothetical example. You are here in Kampala, you have to give out your fitrah in Jinja, maybe, I don't know, different places. If there is a change of rate in these commodities, you have to calculate. For example, you are calculating your fitrah here, 3 kilos, 30,000 shillings. But for example, it is 31,000 shillings in Jinja. You have to consider the city that you are giving out zakat al-fitrah at. You cannot consider where you are. You have to consider where you're paying the zakat for. So this is also important. Even if you are sending your fitrah, first of all, it is not allowed to send your fitrah outside your city, outside your hometown. Many of us will want to send my fitrah to India, to Pakistan, to whatever other places. If you are doing so, first of all, you shouldn't. If you are doing so, in certain cases, then you have to consider the rates and the value of that city that you are paying out zakat al-fitrah for. Now, a person might say that, okay, I have to pay 30,000 shillings of zakat al-fitrah, and for example, he has to pay 10,000 zakat al-fitrah. Now he sees that the amount of zakat al-fitrah for premium rice is 20,000. So he cannot say that I will buy half kilo to 1.5 kilos of 10,000 of that quantity of rice and give it to the poor people. You cannot change your commodity and divide it, if I'm clear with that. For example, I have to pay the amount of rice, standard rice, which is 10,000. This is wajib upon me. But I'm seeing, okay, the premium quality of rice is 20,000. So I might sit and think that why I have to give 3 kilos of standard quality rice. Let me buy 1.5 kg of premium quality, so that person, that needy person, gets 1.5 kilo at least good amount, good quality of rice, which he's unable to eat. You cannot do that. Is it clear? You cannot
choose half of, is it clear Shani bhai? You are giving me a weird look. हाँ? Okay. तो clear है? सवाल है? ओके तो आप ये नहीं कर सकते कि जो है फॉर एग्जांपल हमको 10,000 शिलिंग्स निकालना है और 20,000 शिलिंग्स की अच्छी क्वालिटी के चावल हैं और हम पर जो चीज़ वाजिब है वो 10,000 शिलिंग्स के चावल हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया वो फ़कीर है, कभी उसने प्रीमियम क्वालिटी खाई नहीं है, तो हम क्यों स्टैंडर्ड क्वालिटी के दें उसको, हम प्रीमियम क्वालिटी का हाफ उसको करके उसको दे देते हैं। ये नहीं कर सकते हम, हमें वो एक सा जो 3 किलोज़ है वो उसी क्वान्टिटी में उसको पहुँचाना है। नाउ एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला जो हम हर साल आप लोगों को बयान करता, अच्छा ये भी मैं बयान करता चलूँ, वो लोग वो मोमिनीन जो ज़कातुल फ़ित्रा को लेकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे बिहाफ पर, उनको ये बात, दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट दे कैन नॉट डिडक्ट देयर चार्जेस फ्रॉम दिस अमाउंट ऑफ फ़ित्रा। If there is a committee assigned to distribute fitra at different places, they cannot use that amount of fitra for their expenses, going out, fuel, calling people, delivering food items, packing food items. No, you cannot count that 30,000 shillings. For example, you say, okay, I'll buy the commodity for 27,000. 1,000 for packing, 2,000 for my fuel. Okay, yallah, I'll go and distribute. You cannot do that. If you are willing to do this work, you have to pay your own expenses and you have to deliver that whole amount of 30,000 to that needy person. You cannot say, because I'm delivering it to you, I have called you so many times, I've arranged the meeting with you and so on. You cannot do that. You have to give out the whole amount to the needy people. Okay. When very important, very, very quick, because it's already 30 minutes now. It is also important to give out fitrah from the money that I have, and I have earned it in a halal way. I cannot give out fitrah from the amount or from the money which is haram, which is by haram means I have acquired that money. God forbid if a person, has done some stealing or robbery or riba or whatever, selling out things which are not permissible, whatever means it can be, it should be halal. The money I'm using to give out my fitrah should be halal. Now people will think that, okay, my money is halal, I'm not using riba, I'm not selling out wine, I'm not, but sometimes we overlook at this fact that a person who is not giving out khums is not allowed to use his money. Giving out khums is wajib, and it is the amount, it is the right of imam which is with us, and we are not paying it, and we are not supposed to use that amount. It is the amount of imam alayhi salatu wasalam. Now, for example, a person who has not yet have decided to give out khums till date of up till tomorrow night. We chose this night so that some of the issues might get sorted out tonight before tomorrow night. If a person is not giving khums, and up till now he has not calculated his khums and not given out his khums, I will not go into khums details after this session. If someone wants to discuss this issue, we can discuss later on. But if he's not giving out khums, remember, if you give out fitrah tomorrow night, it will not be accepted. Why? Because you haven't paid out your khums. Now there are 3 ways that you can accumulate, or you can do your calculation for khums. First is tonight you sit down, you calculate your khums, whatever you have missed, whatever you had, all from day one that you started earning and you became baligh, you calculate that, give out your khums, and then give out your fitrah. It might be difficult for a person to do it overnight. There is a different way to do this. You take out a handsome amount of money. You say, for example, I have right now, for example, I have 1 million in my account, total whatever I have. I'm going to give out 20,000 for my khums. And out of that 80,000, you can give out your fitrah, and then later on calculate your khums before tonight, if you are doing it tonight. Now there is a third way to give out your fitrah, which is that, for example, you are supposed to pay your, your fitrah
which is 10,000. Your fitrah amount is 10,000, 3 kilos, 10,000. Now, upon 10,000, you are supposed to pay 2,000 khums. Okay, khums is the fifth part of that amount which is left with you, 20%. Now, if I'm doing any mistake in calculations, please let me know. 10,000 you are supposed to pay out your zakat. Before giving out your zakat al-fitrah, if a person have not paid khums yet, if a person has his own year around, he's paying khums, everything is checked, there is no need for him to worry. But a person who is not paying his khums, I'm talking about that person. Now you have to pay out 10,000. Before giving out this 10,000, handing out this 10,000 or going out and buying something with this, a food packet with this 10,000, you are supposed to give out khums of this 10,000 from your money. So this 10,000 is separate. You take out another 2,000, which is the 20% of this 10,000. So you have 12,000 collectively now, which is your zakat and your khums. Now the people, again, one important point for the people who are collecting zakat al-fitrah, they should have 3 boxes. One is zakat al-fitrah of non-sayyid, one is zakat al-fitrah of sayyid, and one is the box of khums. Okay, so you cannot put this 12,000 in the box of sayyid or non-sayyid fitrah. No, you have to pay 10,000 in, put it in the zakat segment, and the rest 2,000 for the khums. So this is how you can do this. And if a person wants to calculate and sit down and do his khums, it's obligatory again for a person to sit down and calculate his khums. Otherwise your fitrah is again will not be calculated. Now there are again some important points that a person should bear in mind. Sometimes we usually tend to, for example, if it has been decided that you have to give out a fitrah 10,500 shillings, so you will give out a 10,000 bill and you will add a coin of 500. Now if everybody starts adding coins, the person who is going to distribute should carry a handful of a few kilos of coins around. So it's better for you to instead of giving out that 5,000 coin, 500 coin, you give out 1,000 bill note, which is a lot lighter thing to carry around. And there is no harm in giving out more than what you're supposed to give. Although there are certain things that you have to consider, and you have to make this intention that this amount is the amount of zakat, and this amount which is extra added to that is sadaqah, is sadaqat al-jariyah or whatever. So it's also important to understand that when I'm giving out zakat al-fitrah, I have to understand these points also. It is not wajib, whatever, but it is just something that a person can understand. Now, okay, I'll end here. Maybe I'll continue it on the day of Eid, some of the masail. This is again last thing. Many of the mu'mineen, they have asked me about this, that I have a maid at my house, and she's there with me. She comes and she goes and she does work for me, and I'm paying her a salary or him a salary, and he or she is my employee, my servant or a housemate or whatever, house help. If they are also eating with us, they are usually eating their lunch and their dinner is with us. Now, if you have had an agreement with your employee who's working with you, who's helping you in your house, if you have an agreement that I'm going to pay you an amount for your salary, and also for your salary I'm going to include lunch and your dinner. This is what you are earning from me. Okay, this is what I have with you in my agreement, that you are going to work for me. I'm going to pay you, for example, 200,000 at the end of the month, and I'm going to give you lunch and dinner. This is my agreement with you. Then you don't have to give out his or her fitrah, because he or she is earning that lunch or dinner from you. Okay, you are not, he or she is not your dependent. But if you don't have such an agreement and you say, no, you have to, come at the eve of Eid to my house because I'm going to have guests, and you're going to be there with me up till Fajr,
and you're going to help me with the guests and serve them and all, and you're going to be there. I'm going to take care of you. I'm going to, fulfill your needs, your any financial needs. I'm going to feed you. I'm going to whatever. I'm going to look for your kids and all. Such an example will be counted as the dependent, because now you are asking your house help to come and be with you throughout the night, stay with you, and he or she will be counted and calculated as your dependent, your driver, your housemate, whatever. So unless and until they are there with you the whole of that eve, and they are your dependent, then of course you have to pay their fitrah. And if they are not, you don't have to. I know this was the last one, but one more last one is that the person who is giving out fitrah is the criteria of considering Sayyid or non-Sayyid. I am a Sayyid, my driver or my housemaid or whatever might not be a Sayyid. Okay, even if I am taking care of orphans, even if I am sponsoring orphans anywhere, maybe in India, I'm sponsoring orphans. Maybe in Pakistan, I'm sponsoring a family of shaheed, which is a great thawab, in fact. So I have to pay their fitrah. Okay, I have to pay their fitrah. And it is important for me not to consider what they are eating over there. Now understand this. The criteria is the person and the city where it is being paid off. And the person who is paying off. If I'm a Sayyid and I'm taking care of, I'm sponsoring a family, and they are my dependents in India, in Pakistan, anywhere else, I have to calculate their fitrah, and I have to give it out, and I have to put it in the box or the envelope of Sadat, even if they are not Sayyid. And I will calculate and count their fitrah according to what I am giving out here, not according to what they were using over there. Now you might say, okay, they were consuming wheat over there. You are eating rice over here. It's okay. You have to pay out the amount of rice over here. These are different masail that we should consider and we should understand. If there are any doubts or questions, I'm ready to take your question. And एक घर में 5 मर्द रहते हैं, उसमें से एक ने खुम्स निकाला है, 4 ने खुम्स नहीं निकाला है, तो जिसने खुम्स निकाल दिया है उसके बिहाफ में वो और 4 लोगों का निकाल सकता है फितरा? देखिए, यही हमने अभी कहा है, जो पैसा निकाल रहा हो फितरा, उसको देखना है वो खुम्स निकालता है या नहीं निकालता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों कमाते हैं, लेकिन मैं घर का सरपरस्त हूँ, ठीक है, और मैं सबको जो है वो सब मेरे डिपेंडेंट्स हैं. मैं खुम्स निकालता हूँ, हो सकता है मेरे बच्चे खुम्स ना निकालते हों, उनसे हमें मतलब नहीं है. हमें देखना है हम खुम्स निकालते नहीं निकालते हैं. तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें. हाँ, फॉर एग्जांपल, मैं किसी का मेहमान हो गया, अब ये कॉम्प्लिकेशंस इसी में आते हैं. हम किसी के मेहमान चले गए, हम आपके यहाँ, आपने हमें बुलाया, कल बुला रहे हैं कल हम आपके यहाँ आए और हम आपके यहाँ इस तरह रुके कि आपने कहा कि मौलाना हम आपका खुम्स निकालेंगे. ठीक है, अलबत्ता ये एग्जांपल अच्छा नहीं होगा. किसी और के यहाँ हम गए और हमें ये महसूस हो गया, हमें पता है ये खुम्स नहीं निकालते, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि हम आपका फ़ितरा निकालेंगे, और मुझे ये मसला मालूम है कि ये खुम्स नहीं निकालते हैं साहब, और ये जब ये फ़ितरा निकालेंगे तो इनसे कबूल ही नहीं है फ़ितरा, तो फिर मुझे अपना फ़ितरा ख़ुद निकालना है, या फिर मुझे उनको बताना है कि आप खुम्स निकाल कर फ़ितरा निकालेंगे. ठीक है, और वो जो फ़ितरा निकालेंगे वो हर अमाउंट पर निकालेंगे. यानी 30,000 अगर हमें एक का देना है और मेरे जो है वो 3 डिपेंडेंट्स हैं, तो 30 सबका जो है वो खुम्स निकलेगा. टोटल जो अमाउंट निकाल रहे हैं हम फितरे के लिए, उस टोटल का हमें खुम्स निकाल कर उसको पहले पाक करना है, फिर हम जो है वो फितरा निकालेंगे. You've not mentioned about the priority of who to give khums. For example, I have not mentioned many things. Yes. The reason why I'm asking this is because it's a little relevant to the reason why I'm asking is, if you have a family member, for example, who is not in the country, in another country, and that family member, say for example, family member is in India, and they are fakir in India, is there any priority, because you mentioned that khums should be taken out in your country where you are? If you have a family member who is a fakir or who cannot sustain themselves for the year, what is the priority? Am I supposed to give khums in this home country or in India where I have a relative who is a fakir? There is a priority in giving out zakat al-fitra.
you have to give priority to the mu'mineen who are adil, mu'mineen who are of ilm and knowledge and hikmah. They are scholars and they are faqir, they might be faqir. Mu'mineen who are respected and they cannot, and there are fuqara and there are masakeen. You have to consider miskeen more than a faqir. Now a miskeen is someone who doesn't have his daily sustenance. Faqir is someone who doesn't have his yearly sustenance. So you have to prioritize. This is valid. But your technical question is that if I'm having faqir, my relatives outside of my city, am I supposed to send out? You have to see if the fuqara in your city are more eligible, then you have to give it to them. And if you think that no, those are miskeen, those are not faqir who are outside, and they are your responsibility somehow, they are related to you. Maybe there is a scholar out there in Qom or Najaf, anywhere, that he's not in a good condition to pay out his expenses, and you also have fuqara in your place, but he's a miskeen, he's not a faqir. Faqir is a person who has his sustenance for 2-3 days or a month, not having sustenance for his year along. But a miskeen, this is clearly mentioned in Ayatollah Sistani's Masail. A miskeen is a person who does not have for his own day. He will be having lunch. He does not know will he be having dinner or not. So you have to prioritize and give priority to the miskeen over the faqir. So if they are both in one level, then you have to give out your fitrah in your own hometown. But if you think that it is upon you itself, the person who is giving it is upon you, no one else can decide on your behalf. You have to consider whether they are more in need or the people in your city are in more need. Assalamu alaikum. I've got 2-3 questions. The first one is the kids who are studying up country. Their fitrah is supposed to be removed by us, or they should remove from there? If they are earning, if they are dependent, if they are malik. Yes, if you are not, giving them, if you're not supporting them financially, they are on their own, and you don't send them money. You might be giving them, pocket money or here and there. But if they are living an independent life, they are earning themselves, they are paying their rent, they are paying their, whole around the year, they have been paying their own expenses, then they have to give out their fitrah on their own. You are not supposed to give their fitrah. Okay, like I give pocket money, then on that... Is that pocket money something that is there for their year-long sustenance? Yes. So they are your dependents. So I have to pay over. Yes, you have to pay, even if they are earning. Okay. Even if they are earning. But if they are, get this thing clear. I might not be a faqir, but if I go to, where did Hussein uncle go? चले गए वो तो. मुझे उनके घर जाना है कल रात को अगर हम आपके घर आ जाएं, मैं फ़कीर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके घर अगर आ जाऊँ और मैं आपका डिपेंडेंट बन जाऊँ, तो आप मुझे मेरा फितरा निकालेंगे. सेम वे अगर कोई ऐसा है कि जो आपका डिपेंडेंट है, आपका बेटा है, आपका भतीजा है, वो अपना कमा रहा है, सब उसके पास अपनी अर्निंग्स हैं, लेकिन ही इज़ योर डिपेंडेंट, तो यू हैव टू पे हिज फितरा. और अगर किसी के दो वो हैं, if a person is being sponsored by 2 people, for example, there is a yatim, you and me collectively are paying his sponsorship. For example, he requires $1,000 per year for his expenses. 500 I'm paying his expenses, 500 you are paying. There are so many organizations, they do that. So if me and you, we are collectively supporting one orphan, one family, I'm just giving you an example, it might be anybody else. For example, if I'm supporting, for example, there is a maid in the house, 2 brothers are living in the same house, and they have one maid, and they have, they have their different houses, they have different kitchens, both of them, they have their different fitrah to pay for their families, but they have a single common housemaid, whom they are, supporting, is their dependent. Now, both of them, in this case, if a single person has 2 or more dependents, the zakatul fitrah amount should be divided equally between those sponsors. So if the zakatul fitrah for that yatim is 10,000, me and you, we are supposed to divide it 5,000 and 5,000. If between me and you, one of us becomes faqir, then it is not obligatory on me to pay 5,000, it is still upon you to pay. Is that clear? Secondly, as the Jamaat is collecting on behalf of the fitrah,
and they've given the figure 30,000 for superior rice. And I come and I say that no, the price is 25,000. Does the Jamaat collect that money, which he is saying? For example, 25,000? today, I will give you a live example because I was very, it's my, I'm not so used to this. Is my first time, although I gave my fitra last year also here. But since today, this year, I was here with my family. Today I went down and I bought the wheat packet from the same store which I usually buy from. So I got this wheat packet, 5 kilos for 30,000, okay? Which is around 6,000 a kilo. 6,000 means 18,000 per person. And what you have announced is wheat as 13,500. So there is a difference between the amount that you have announced and the amount I'm using. So I will go out and pay the amount which I think is obligatory upon me. I will not consider this. So is the Jamaat... Yes, you are can not supposed to, collect because that this is a less courtesy. This is a courtesy that you have done, and a favor that you have done to the mu'mineen, that you have given out them the amounts. But if I think that I have been using something which has a different figure than this, that I'm supposed to pay that. I'm eligible to pay that figure. The people who are collecting are they do not ask. They just are supposed to. They are supposed to ask whether this is for Sayyid or non-Sayyid, or is it khums. That is it. You don't have to ask you are paying for 5 people or 6 people or 10 people. It is upon the person who is paying. It is upon the person who is paying. It is his duty to, you may tell them the fatwa, but you are not supposed to, tell them that this is what you have to do and this is what I will collect from you. Any more questions or suggestions? Ji. अगर फितरे का एक्चुअल टाइम कब से स्टार्ट होता है? आई थिंक ईद की फजर से होता है या पहले से होता है? जैसे अगर हम आज दे रहे हैं जमात को या कल देंगे, तो हम फितरे की नीयत से देंगे या किसी और नीयत से देंगे, और उस दिन हम इसको फितरे की नीयत में तब्दील करेंगे? इसीलिए कहते हैं जल्दी आया करिए, आप टाइम से नहीं। ये मसला पहले बताया था टाइम का, क्योंकि हमें पता है कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। नहीं, जो ख़ास लोग होते हैं उनको उनके चेहरे याद रह जाते हैं, हमारे रज़ा भाई ख़ास। तो टाइम मैंने बयान किया था, 2 चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करना है, एक गुरूब आफ्ताब और एक नमाज मगरिब। गुरूब आफ्ताब का जो टाइम है वो कंसिडर किया जाता है शराइत वजूब फ़ितरा के लिए, कि आक़िल हो, बालिग़ हो, मुस्ततीब, फ़कीर ना हो, फ़लाँ वैसा। लेकिन जब फ़ितरा निकालने का वजूब है वो नमाज मगरिब शब ईद की वक्त है। शब ईद परसों अगर ईद है तो कल मगरिब के बाद से आपको देना वाजिब हो जाता है। वजूब दफ़ मबलग़ फ़ितरा नमाज मगरिब के बाद से लेकर कब तक के है? यहाँ पर फिर 2 चीज़ें। अगर आप नमाज़ पढ़ने की नीयत रखते हैं उस रात, तो आपके लिए नमाज ईद से पहले वाजिब है, मगरिब से लेकर नमाज ईद से पहले। और अगर आपकी नीयत नहीं है पढ़ने की, तो ज़ोहर तक आपके पास टाइम है कि आप ज़कात फ़ितरा दे दें। और अगर कोई शख्स नहीं देता है, भूल जाता है, ज़ोहर का वक्त भी गुजर जाता है, तो भी उसको जो है फ़ितरा बाद में देना है, जब भी उसको याद आ जाए। लेकिन किस नीयत के साथ? ना अदा ना क़ज़ा, माफ़ ज़िम्मा की नीयत करेगा कि जो भी मेरे ज़िम्मे हो वो पूरी हो जाए। सेकंड पार्ट रह गया है ना, अगर अभी हम दे रहे हैं तो फितरे की नीयत से ही देंगे या कुछ किसी और नीयत से? हाँ, अगर आप अभी दे रहे हैं, बेहतर यही कल दिया जाए फ़ितरा। यही मैंने अभी अर्ज़ किया, आगा सिस्तानी के नज़दीक एहतियात मुस्तहब ये है कि मगरिब के बाद से जब वजूब आ जाए तब इंसान जो है वो फ़ितरे का अमाउंट दे। और अगर कोई अभी भी देना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है, वो दे सकता है। लेकिन द पर्सन कलेक्टिंग विल कलेक्ट ऑन हिज और हर बिहाफ। वो ये कहेंगे कि भाई मैं आपको, और वो तो नियत उस वक्त भी करना है हमें, कल भी जब हम देंगे तब भी नियत करना है। लेकिन आज एक एक्स्ट्रा नियत ये करना है कि मैं ये अभी दिए दे रहा हूँ, कल जो है ये फ़ितरे के उन्वान से आप हमारी तरफ से निकाल दीजिएगा। वालेकुम सलाम। I have a friend of mine who is not a Muslim. Is it allowed to pay zakah? To a non-Muslim? Yes, a non-Muslim. No, you cannot pay it to him, because as I said that the person who is receiving, whom you want to give a zakatul fitra, he should be a Shia Ithna Ashari. Okay? And if you don't find a Shia Ithna Ashari, a 12er Imami, okay, you understand Shia Ithna Ashari, who believes in the 12 Imams. You have any doubt? No, I'm coming to your question. So you have to give out fitra to a Shia Ithna Ashari.
If you don't find a Shia Ithna Ashari, then you can give it to any other Muslim, considering he is not a Nasibi, he doesn't curse Ahl Bayt alayhi salatu wasalam, but in no way you cannot pay fitrah to a non-Muslim. And if you don't find someone in your city, you can give it out in a different city. Is Yes, it is okay if he says he is a Shia Ithna Ashari and he believes in. We don't have to go deep in his family life and see whether he is lying or is he saying the truth. my question is, my friend is not a Muslim, and she is interested to pay. Yes, Zakat. Ayatollah, you say she or he wants to pay. Zakat al-Fitra is wajib on, this is something, some exceptional cases in the Islamic jurisprudence, that Zakat al-Fitra is wajib upon non-Muslims also, to pay out Zakat al-Fitra. This is interesting. It is very clearly mentioned in the Tawzul Masail that Zakat al-Fitra, the condition of paying Zakat al-Fitra is not Islam. So a non-Muslim also has to pay Zakat al-Fitra for his well-being. But we cannot compel them. We don't tell them because you did not fast, because they are not fasting. That is why we say it is not a duty only upon someone who is fasting. Even if a person, a Muslim or a Shia who is not fasting, is supposed to give out fitrah. And it is not a condition to be a Muslim or not Muslim to pay fitrah. But to receive fitrah, yes, we have this condition. So if a non-Muslim also is paying fitrah, he cannot say, okay, since I want to pay out my fitrah, I can pay out again to a non-Muslim. No, he has to give it to a Shia Ithna Ashari. You let them know this. Ji. मौलाना क़िबला, ज़कात फ़ितरा आइंदा आने वाले एक साल के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंश्योरेंस, इस रोशनी में मेरे यहाँ शब ईद को ऐसा मेहमान आ जाता है कि जो दुश्मन इस्लाम है, काफिर है, मेरे ऊपर उसका फितरा देना भी वाजिब हो गया। अब मैं उस दुश्मन इस्लाम की सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंश्योरेंस दे रहा हूँ, यानी मैं खुद इस्लाम के ख़िलाफ़ एक काम को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये बात मेरी समझ में नहीं आती, इस पर ज़रा रोशनी डालें। ये जो अलबत्ता आप हमारे अल्फाज पे ना जाइए, तो मैंने समझाने के लिए इंश्योरेंस और ये सब कह दिया था। वो जो रिवायत है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उन्होंने कहा कि जाओ जाकर जो है मेरे ग़ुलामों का भी फ़ितरा दो कि मुझे डर है फ़ौत का। तो पूछा फ़ौत क्या? तो कहा डर है मुझे मौत का, यानी वो मौत से महफूज रहेंगे। तो आपका टेक्निकल सवाल ये है कि भाई मैं अगर किसी दुश्मन अहले बैत हमारे घर पे आ जाए, हम उसका नौकर है, हमारा कुछ भी है, हमें उसका फ़ितरा देना है, तो हम उसकी ज़िंदगी का जो है वो इंश्योरेंस निकाल रहे हैं। वो इस तरह से नहीं है कि जो है वो महफूज रहेगा, बल्कि चूँकि वो हमारा डिपेंडेंट है और हमको कोई नुकसान ना पहुँचे उसकी वजह, तो हम ज़कात फ़ितरा निकाल रहे हैं। आप समझें इस चीज़ को कि हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि मैं अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उसकी तरफ से भी निकाल रहा हूँ, ना ये कि जो है उसके लिए कोई बेनिफिट है उसके अंदर। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, यानी जो चीज़ कबूल होगी उसकी शर्त तक़वा है, उसकी शर्त तक़वा है, उसके हाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो अगर मुसलमान है, शिया इतना अशरी है, वो खुद बिलीव करता है कि मुझे ज़कात फ़ितरा देना चाहिए थी, लेकिन चूँकि मुझ पर वाजिब नहीं है, प्रोफेसर साहब पर वाजिब मेरा फ़ितरा, तो वो देंगे, वरना मैं खुद देता, अगर वो ये बिलीव करता है। चूँकि वो ये बिलीव नहीं करता, तो हम जो फ़ितरा दे रहे हैं वो ये है कि चूँकि ये मेरा डिपेंडेंट है, उसकी यहाँ होने से मुझ पे कोई नुकसान ना हो, मेरे लिए फ़ायदा रहे, मेरे लिए अच्छा रहे, तो मैं उसका फ़ितरा दे रहा हूँ, नहीं कि मैं उसकी सलामती के लिए दे रहा हूँ। ऐसी नीयत नहीं होती है। ये तो एक बताने के लिए बात कही जाती है कि जो है वो, और हकीकत भी यही है कि इंसान जब अपना फ़ितरा दे रहा है, अपने घर वालों का फ़ितरा दे रहा है, तो एक तरीक़े से महफूज भी कराओ। कितनी दर्जनों बलाओं से जो है महफूज हो रहा है। ये सवाल जो प्रोफेसर आबिदी का है, आई थिंक 2-3 साल पहले भी पूछना आया था। लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि दुश्मन अहल बैत होवे और वो आया घर पे और हमारे ऊपर फ़ितरा वाजिब हो गया, तो उसके जेब में तो नहीं जाता है ना फ़ितरा, तो जो मुसलमान के जेब में जाता है, तो वो नलीफाई हो जाता है। द इक्वेशन इज़ फाइन। जाहिर सी बात है, यानी उसका एक तरीक़े से बेनिफिट जो है वो उसको नहीं जा रहा है,
यानी मादी बेनिफिट भी नहीं जा रहा है और मानवी बेनिफिट भी उसको कोई नहीं जा रहा है, वो तो हमारे लिए कि हमको जो है कोई नुकसान ना पहुँचे। तो अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम लोग रैप अप करते हैं इंशाल्लाह इस नीयत के साथ कि परवरदिगार आलम इंशाल्लाह हम सब की नमाज़ें, रोज़े, इबादत कबूल फ़रमाए और परवरदिगार आलम इंशाल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ दे कि बेहतरीन तरीक़े से वाजिबात पर अमल कर सकें, मुहर्रमात से परहेज़ कर सकें। परवरदिगार इंशाल्लाह हम सबको इमाम ज़माना के आवान व अंसार में शामिल फ़रमाए और ज़ुहूर फ़रमाए ताजील सरकार इमाम ज़माना में। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साआ व फ़ी कुल्ले साआ वलियन व हाफ़िज़न वक़ाइदन वनासिरा वदलीला वअईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़-ज़ुअफ़ाए वल-फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश-शिय्यत व-ज़वार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अनीस अन-नफ़ूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफ़ून बि-अर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबुज़्ज़मान सय्यदी अलमान 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 मिन फ़ित्नतिज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या ख़लीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान। अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।